Assalamu alaikum beta. We are covering O-level chemistry 5070 or 0620, and today's topic is salt preparation. Go through the learning outcomes for a few seconds and then we are going to start. First we are going to define salt. This salt किसे कहते हैं? When H positive and an acid is completely or partially replaced by a metal ion, that is called a salt. For example beta, HCl है, you have HCl, that is hydrochloric acid, and H has been replaced by a metal atom, Na. Now it's a salt. और ये जो मैं बात कर रहा हूँ that is for complete replacement. Salt बन गया, that is a salt. But sometimes ऐसा नहीं होता. Sometimes partial replacement होती है. For example, H2SO4 है. अब इसमें एक H रहेगा और एक की जगह मेटल आ जाएगा. You see, two H's, यहाँ पे दो H हैं, यहाँ पे एक H है और वन H हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सोडियम. सो इस सिचुएशन में बेटे आप सॉल्ट को क्या कहेंगे? एन एसिडिक सॉल्ट. वाई एन एसिडिक सॉल्ट? क्यों इसके अंदर एसिडिक? क्योंकि हमने पहले एसिड बेसिस एंड ऑक्साइड्स में हमने एसिड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H positive ions in water. So once you are going to put this thing into water, this thing would get into water and to produce H positive ions. So acidic properties are there. So acidic properties are there. Still one H positive ion is there. So when it is put into the water, it is going to produce H positive ions in the water. So it is an acid. But because one H has been replacement हो चुकी है with a metal atom, then it is considered to be a salt as well. So that's why we call it acidic salt. So whenever there is a partial replacement, then the salt produces the acidic salt. ये क्वेश्चन पहले आते थे इस टाइप के, पर वो स्पेशली यही पूछता था कि why sodium hydrogen sulfate is considered to be an acidic salt, and you're gonna write it these 2 points to get the full marks. But अब recently कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं आया. The very next that we are going to do is rules of solubility. ये जो रूल्स ऑफ solubility आपको याद करने हैं, मैं आपको लर्निंग आउटकम्स में दिखाता हूँ. दिस पोर्शन, ये सारा रूल्स ऑफ solubility को केटर कर रहा है. लेट मी राइट. नंबर 1, ऑल नाइट्रेट्स आर soluble. ये आपने याद कर लेना और लिख के अपने पास अच्छे से. All nitrates are soluble. Number 2, all ammonium salts are soluble. Number 3, all group 1 salts are soluble. Number 4, all sulfates are soluble except calcium sulfate, barium sulfate, and lead sulfate. Number 5, all chlorides are soluble except silver chloride, lead chloride, and mercury chloride. None of the carbonates are soluble except group 1 carbonates and ammonium carbonates.
ठीक है। सेवंथ, ऑल oxides of group 1 and calcium oxide of group 2 are soluble. Rest of all are insoluble. बेटे आप रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी को आपने मेमोराइज करना है, याद करना है, क्रैम करना है, रट्टा लगाना है। तो कुछ चीज़ें मैं बता, ऑल नाइट्रेट्स का क्या मतलब है कि अगर आपका किसी तरह का भी अगर सिल्वर नाइट्रेट भी है तो दैट इज सॉल्युबल। आपका कैल्शियम नाइट्रेट है तो सॉल्युबल। अमोनियम सॉल्ट क्या होता है जिसमें NH4 पॉजिटिव होता है, तो NH4NO3 हो तब भी सॉल्युबल, NH4Cl हो तब भी सॉल्युबल। ग्रुप 1 का क्या है, ग्रुप 1 में अगर पोटेशियम किसी में, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम सल्फेट तो सॉल्युबल। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका क्या क्या मतलब है। खैर, जब मैं एसिड बेसिस पढ़ा रहा था तो उन कुछ आपको पॉलीएटॉमिक रेडिकल जुबानी आनी चाहिए, उनके फॉर्मूलाइज जुबानी आने चाहिए। एंड व्हाट आर दोस, ये है नाइट्रेट। ये बहुत कम आता है लेकिन पता होना चाहिए। फॉस्फेट, कार्बोनेट, अमोनियम, ये वन है। सल्फेट SO4 नेगेटिव। बेटे तो आपको ये सारे, ये बेशक ना आता हो, ये सारे आपको आने चाहिए।